So today in this class we'll discuss past perfect tense. There is perfectionism. There is something which will be very perfect. So there are three terms in this phrase. Past perfect tense. Tense that is related to time, and past it is related to time which was in the past. And perfect means something completed. So past perfect tense is a tense that is used to describe an action that was completed before another action. What does it mean by this? मैं तो डर गया. वीडियो चल रही है इसलिए मैं उर्दू में ही कह रहा हूँ. ये भी क्लास का एक हिस्सा होगा. मैं ये सोच रहा था कि मोबाइल दे दिया. इतना डरा. अच्छा, this tense is used to describe an action that was completed before another action. There will be two actions. There will be two actions. One will be completed. One will be completed before another action. Now, at the end, I will explain it. For example, when I arrived at the station, this is one action. The train had already left. This is another sentence, and this is another action. So this tense is talk about the completed action. The action that was completed. One action will be completed before another action. It will be completed before another action or time in the past. For example, when I arrived at the station. When I arrived at the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, फिर क्या हुआ था? दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ था. The train had already left. तो ट्रेन जा चुका है. तो ये एक एक्शन है कि जब मैं वहां पर पहुंचा, तो वहां पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था. Clear? It will show two actions. The one will be completed before the another action. This is completed action, and this is completed before this action. So the past perfect tense show two actions, and those two actions, one action will be completed before the first action, or the first action will be completed before the second, and the second will be completed before the first. कि past perfect tense में दो actions होंगे. उन दो एक्शंस में एक एक्शन पहले वाले एक्शंस के निस्बत मुकम्मल हो चुका होगा, उससे पहले हो चुका होगा. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. पास्ट ऑफ द पास्ट. ये दोनों टेंसेस, ये दोनों एक्शन जो है ये पास्ट में. ये क्या है? ये पास्ट में है. लेकिन एक जो है वो पास्ट का भी पास्ट होगा. वो जब मैं वहां पहुंचा, ये पास्ट की एक बात है. तो ट्रेन जा चुका था, ये भी पास्ट की एक पास्ट है. तो ये दोनों बेसिकली these two are past action, but this action will be completed before this action. दोनों एक्शन जब होंगे, दोनों ही पास्ट में होंगे, लेकिन इन दोनों में एक एक्शन ऐसा होगा जो पहले वाले एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका होगा. So it is called past of the past. It helps establish a clear timeline. ये हमें सही टाइमलाइन के बारे में बताती है. When discussing two or more events, जब हम दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये हमें एक क्लियर टाइमलाइन देता है. हमें बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड होती है यहाँ पर इस टेंस में. That happened at different times in the past. Different time में, पास्ट में, different टाइम में जो डिफरेंट दो एक्शन हुए हो, उनमें एक एक्शन ऐसा होगा जो दूसरे वाले एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका होगा. कि फॉर एग्जांपल कि कल जब तुम यहां पर आए थे तो मैंने क्लास स्टार्ट किया था. कल जब तुम यहां पर आए थे, ये एक पास्ट एक्शन है. मैं क्लास स्टार्ट कर चुका था, ये भी एक पास्ट एक्शन है. लेकिन इन दोनों एक्शन में मुकम्मल जो कंप्लीटेड एक्शन है कौन सा है? वो ये मैं काम कर चुका था. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. नहीं समझे? वो बताइए ना.
happened, the leaving happened, the train had already left. Means देखिए the leaving चीज़ बोला है. The leaving happened before the arrival. So arrival से पहले leaving हो चुका है. तो दो actions होंगे जिनमें से क्या होगा कि एक action जो होगा वो दूसरे के बाद होगा. लेकिन दोनों वाले एक्शन पास में ही होंगे, दोनों मुकम्मल होंगे, लेकिन उनमें से जो एक्शन होगा वो पहले वाले एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका होगा, तो ये पास परफेक्ट टेंस होगा. Not get my point. Are you getting? To sequence past event. Now these are two events, and I am going to sequence these events. The train had already left when I arrived at the station. Same is the situation and same is the case. You write this before and this after, it doesn't matter. But in these two actions, one action is completed. So the basic tense is the train had already left. This is head, this is subject, and this is what third form. This is the original point. But this action will be completed before another past action. ये वाला एक्शन कंप्लीट होगा, मुकम्मल हो चुका होगा, लेकिन दूसरा कोई पास्ट टेंस पास्ट एक्शन इसमें अंदर होगा. बेसिक पॉइंट ये है, समझ में आया? To describe a condition in the past, एक कंडीशन पास्ट में होगा. I was hungry. I was hungry because I had not eaten all day. मैंने तमाम दिन नहीं खाया था, मैं तमाम दिन नहीं खा चुका था. That is why I was hungry. So in this sense there is a condition. So when we start the academy, we discuss conditional sentences. Condition, first condition, second condition, zero condition. So these are the sentences. I was hungry because I had not eaten all day. All day I had not eaten. This is the actual tense, the actual action. Plus, but this is the reason. So now look at the reason. This is in past, and this is also in past, and this is in past perfect. Past perfect tense has a formula to report past states or action. Past states are. She told me. This is in past. She told me she had finished her homework. She had finished her homework. वो अपने काम को मुकम्मल कर चुकी थी. वो अपने काम को मुकम्मल कर चुकी थी. She told me. उसने मुझे बताया था कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर चुका. मैं अपने काम को मुकम्मल कर चुकी थी. उसने मुझे बताया था कि वो अपने काम को मुकम्मल कर चुकी है. So these two are past actions, but in the past action this is past perfect and this is only simple past action. So there will be two actions. The one will be completed before another action. So this will be past perfect tense. Sentence structure. Now this is the structure, this is the structure, and this one is the structure. Sentence structure for affirmative sentences: subject plus head plus verb, third form, past participle form plus subject. Subject is he. Like this is train subject. This is subject. This is subject. After the subject will be had. He had. The word third form played. He had played football. वो फुटबॉल खेल चुका था. वो फुटबॉल खेल चुका था. When I reached there, he played football. जब मैं वहाँ पहुँचा, ये एक एक्शन है. He played football. वो फुटबॉल खेल चुका था. तो एक दो एक्शन पास में ही होंगे, लेकिन इसमें एक जो है वो कंप्लीटेड हो. तो ये वो हमारा वो वाला कंप्लीट वाला पोर्शन है. She had cooked the meal. वो खाना पका. She had cooked the meal or food. वो खाना नहीं पका चुकी थी. वो खाना पका चुकी थी. It had rained. बारिश हो चुकी थी. बारिश हो चुकी थी. When I picked the umbrella, it had rained. Two action. जब मैंने छतरी उठाई तो बारिश हो चुकी थी. I had eaten mango. Do you like mango? Why you had eaten mango?